The advantages of the vacuum dewatering. Okay. Yesterday we have talked about the vacuum dewatering. Suppose in here they have used the some vacuum pumps so that the additional water cement ratio will be reversed back, so that the lower water cement ratio will be maintained and high strength can be possible achieved. Okay, increase the wearing resistance, increase the tensile strength in the bending, and no curl on that, and no curlings, and minimum drying shrinkage, and minimize the plastic shrinkage, and minimize the crack formation and higher strength, and minimizes the damage on the newly casted pavement. These are the advantages once the vacuum dewatering is applied. Next, we will go to the applications where this vacuum dewatering. Only it is possible in case of the pavements only. Otherwise, flooring, that means slabs. At the roof slabs, you can do it. That means from the one side only it is possible. But this method is not suitable for the columns, beams, and where the vacuum pumps can be inserted. In that cases, it is not possible. Only the slabs only the possible dewatering. Next, now you see here he is sucking the extra water. That means this is the pump. This pump is at the bottom, some sponge material is there. Through that, the only water particles will be extracted, and so that the now you see here this area, and this area he is covered this gunny bags, and after that he will suck the material. This is the construction of the pavements. Next, new topic, controlled permeability formwork. Very latest technique. This is the CPF, the CPF liners. One day I have already discussed about this controlled permeability formwork. Normal formwork, generally what type of the formwork you people are heard about that. Here you are aware of the steel formwork and wooden formwork. Majority cases, steel formwork or wooden formwork. Or nowadays some aluminum formwork also they are using. But controlled permeability formwork is also there, but it is very costly one. You have some advantages, but it is a very costly affair. But in India, we don't have this technology, but Canada and New Zealand, these people are very familiar. Next, what is meant by CPF liners? That means controlled permeability formwork. This formwork, what is the purpose of the formwork? Suppose you want to cast the beam, you want to cast the column, you want to cast the slab, what you will do? Because the concrete will attain the strength after 21 days. The concrete will attain its strength after 14 days. The concrete will reach at least 7 days. Then only you can say that you can remove the formwork. Up to that 21 days, up to that 30 days, up to 14 days, you have to keep the outside formwork. Suppose beam, it is a rectangular shape. So you have to pour the concrete from the top. At that time, in the three sides, you have to make the shape of the beam, and after that the concrete should be poured over it, and after 21 days the shuttering will be removed. Normally what you will follow in the field. But in case of the controlled permeability formwork, the beauty is it can be used the lower water cement ratio, what you can't control in the normal steel formwork and wooden formwork. This is the beauty of the controlled formwork. The controlled permeability formwork, CPF liners, these are called the gem drains. This the other name is gem drain is the company name. Gem drain is the company name. The controlled permeability liners are made from the fine polypropylene fibers. Actually, just like shirts. That means some shirt material you are making with the polyester fibers and polypropylene fibers. Similarly, this controlled permeability formwork liners also made with the that means PP fibers. That means polypropylene fibers. It creates a sheet with a large number of the fine pores, controlled size. The size is very minute. That means cement particle size is how much? What is the size of the cement particle? On an average size is 4 microns. So, आपका जो cement particle है should not enter or should not drag it from the concrete. So, आपका जो भी pore है, that pore should be finer than the cement grain. That is the beauty. That means if the pore size is more than the size of the cement particle, then what happens? The cement particles also come out. So it should not be permitted.
So for that purpose, water can be permitted to go out, but the cement should not go out from the concrete matrix. With the appropriate porosity and permeable water and air and water can be go out, but cement particles and sand particles and fly ash and silica few microparticles should not go out from the concrete. Okay, now you see the picture of this controlled permeability formwork, just like a very thin mesh. That means आपने देखा होगा, चलनी देखा होगा, 75 माइक्रॉन्स सीव देखा होगा, 75 माइक्रॉन का सीव, उसका जो फाइनिंग देखे, दैट मीन्स ये जो ग्रेन है, दैट मीन्स इसका जो अपर्चर साइज है, मतलब कितने फाइन रहते हैं. सिमिलरली इसी से पानी दूसरा साइड जा सकता है, बट अदर पार्टिकल्स शुड बी अरेस्टेड इन द कंक्रीट इटसेल्फ. ओके, बट वेरी कॉस्टली मटेरियल दिस वन. ओके, now you see this is the using of the controlled permeability formwork liner gem drains. This is the trademark. Okay, gem drain is the company. Now these people are using this permeability sheets. That means they are casting the one boiler. Actually, this is the liner of some boiler. They are making the controlled permeability. Now you see this the quality of the, after removing the formwork, the quality of the surface is very smooth. There is no need of the plastering. नॉर्मली फॉर्म वर्क निकालने के बाद प्लास्टरिंग करना पड़ता है. आप है बीम है, कॉलम है, स्लैब है, मतलब वो फॉर्म वर्क रख दोगे, 21 डेज के बाद फॉर्म वर्क यू हैव टू रिमूव इट. आफ्टर दैट फॉर द फिनिशिंग you have to give the plastering. Normally 1 centimeter thick plastering you have to provide, but in case of the controlled permeability formwork there is no requirement for the plastering. Okay, now formwork liners, the basic elements of the controlled permeability formwork system is, that means इसमें क्या क्या elements रहेगा, एक है मतलब mesh रहेगा, उसमें तो drainage रहेगा, filter material. सपोज आपने वाटर प्यूरिफायर देखा होगा, एक्वागार्ड है ना, आरओ वाटर फिल्टर देखा घर में, जो प्यूरिफाइंग सिस्टम है, उसमें क्या रहते हैं, पहले तो फर्स्ट है सेडिमेंट रहते हैं, फिर इसके बाद कार्बन फिल्टर रहते हैं, देखा होगा एक्वाग्रांड एक्वागार्ड में, मतलब पानी घर में जो किचन में पानी पीने फिल्टर रहते हैं ना, उसमें क्या है, उसका जो पानी के अंदर है सेडिमेंट पार्टिकल्स है, वेरी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उसको अरेस्ट कर देती है. एक्सटर्नल सेडिमेंट रहती है. फिर इसके बाद है ना कार्बन फिल्टर रहते हैं, माइक्रोफाइन फिल्टर रहते हैं, समझ में ना, फिर यूवी रहते हैं, आरओ रहते हैं. सो द वेरियस फाइननेस ऑफ दैट फिल्टर, दैट मीन्स उसके अंदर बहुत बारीक फिल्टर लगा दिया. मान लीजिए कपड़ा, मतलब पानी गंदा है, नॉर्मली विलेज पीपल व्हाट दे विल डू, दे विल टेक ए कॉटन क्लॉथ and by using the double layer and they will pour the water, whatever the suspended and the topmost particles will be arrested. Okay, bottom particles they will use for the other washing of the utensils, and sometimes they will use for the drinking. In village people what they will do, they will collect the water from the lakes and rivers, and they are the very poor people, so they can't afford this RO and water, this aquaguard and etc. So what they will do, they use a simple cloth and they will filter the mud materials. जितना भी कीचड़ है ऊपर अरेस्ट हो जाएगा. कपड़ा एक बार दो बार है ना, 2 दिन फोल्डर्स, दैट मीन्स लेयर्स करके कर देते हैं. दैट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग द फिल्टर, सिंपल फिल्टर and drainage system and structural support. That means farm work main purpose is it has to support the beam, it has to support the column, it has to support the structural member. Structural support is also required. साथ साथ में फिल्टर मटेरियल भी होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए. दिस जम ड्रेन्स, कंट्रोल्ड परमेबिलिटी लाइनर, ये कंपोजिट फिल्टर आर फैब्रिक मटेरियल. नॉर्मली इट इज जस्ट लाइक कपड़ा, मान लो इट इज जस्ट लाइक ए क्लॉथ, है ना, आर ड्रेनेज नेट, एक फाइन मेश आर फाइन नेट व्हिच नीड्स द मिनिमल टेंशनिंग एंड मल्टीपल यूज. नॉर्मली 1 or 2 यूसेजेस के बाद है, मतलब कंट्रोल परमेबिलिटी फॉर्मवर्क है, फेंकना पड़ता है. दैट मीन्स उसको रीवॉश करना एंड उसको क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल है. बिकॉज आप जितना भी कह दो, मतलब वो व्हाट एवर दैट सेइंग इज समथिंग एंड एक्चुअली द
इन द फील्ड यूसेज इज समथिंग, मुंह से कुछ भी कह सकता है, बट फील्ड में एक बार है कंट्रोल्ड परमिबिलिटी फॉर्म वर्क यूज करने के बाद, ये एक साइड है सीमेंट पार्टिकल्स है ना, ये थिक लेयर है, मतलब डिपॉजिट हो जाती है, फिर उसको मतलब धुलाई करना और उसको मतलब साफ करना उतना आसान नहीं है, एक बार दो बार यूज करके पूरा पूरा कंप्लीट फॉर्म वर्क को फेंकना पड़ता है। दैट मीन्स ये फॉर्म वर्क है, द मेकिंग चार्जेस आर वेरी वेरी कॉस्टली, बट ओनली वन आर टू सिंगल यूसेजेस in the marines, whatever the sailors, they won't take the bath। आपको पता है ना समुद्र के अंदर है जो मेराइन्स में जो ट्रैवल करता है, एक महीना दो महीना जो भी समुद्र का अंडर वाटर रहता है ना, वो लोग नहाता नहीं है, ओनली वो लोग है यूज एंड थ्रो कपड़ा पहनता है, ओनली कुक जो कुक खाना बनाता है मात्र वो आदमी को ये पानी मिलता है, बिकॉज स्केर्सिटी। आप है एक दो महीना पानी मतलब समुद्र के अंदर है, दैट मीन्स जो इसको क्या बोलते हैं सबमरीन के अंदर रहते हैं, आप हर आदमी नहाए तो पानी नहीं मिल पाएगा पीने के लिए, इसलिए क्या करेगा वो लोग है यूज एंड थ्रो कपड़ा यूज करता है, मतलब एक दो दिन पहनता है फिर कपड़ा फेंक देता है, समझ में आएगा ना। सो सिमिलरली ये जेम ड्रेन्स आल्सो वन टाइम बेस्ट सरफेस मिल जाएगा, फिनिशिंग बेस्ट सरफेस, सेकंड टाइम यूज किया तो मतलब ऑलरेडी सीमेंट पार्टिकल्स एंड फ्लाई ऐश पार्टिकल्स सिलिका फ्यूम पार्टिकल्स है ना, मतलब पानी के साथ है ना आके अंदर मतलब अरेस्ट हो जाता है। अभी आपका घर के अंदर आरओ और एक्वागार्ड है, एक बार खोल के देखो आफ्टर 6 मंथ्स उसको पूरा डट्टी पार्टिकल्स है, पूरा एक लेयर डट्टी स्किन फॉर्म होता है आउटसाइड में, फिर उसको पूरा फेंकना पड़ता है, दैट मीन्स पूरा कार्ट्रेज फिल्टर्स है, मतलब बदलना पड़ता है ये फिर 6 मंथ्स में एक बार, समझ में आएगा ना। Similar way, these liners also clogged with the materials in the sense cement, fly ash and silica fume particles से clogging हो जाता है, अरेस्ट हो जाती है पार्टिकल्स। सो एक इसके बाद है ना उसका जो एफिशिएंसी है, व्हाट इज द एफिशिएंसी मीनिंग, दैट मीन्स पानी छोड़ना पड़ता है एंड बाकी पार्टिकल्स को अरेस्ट करना पड़ता है, बट पानी बाहर आएगा नहीं, निकलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अरेस्ट हो गया था जो अंदर है, मतलब जो भी उसका जो अपर्चर्स है, ये रिफाइन नेट है ना, मेश है ना, वो मेश है ऑलरेडी, वो मेश है ब्लॉक हो गया, क्लॉग हो गया, माना फिर इसके बाद पानी निकलेगा नहीं, तब क्या है, देयर इज नो एडवांटेजेस, देन इट इज जस्ट लाइक एक्टिंग एज ए नॉर्मल वुडन liner and that aluminum liner and the steel liner, whatever normal cases, normal farm work है wooden liners and steel liners यूज करता है ना फार्म वर्क के लिए, जैसा जैसा 1 मीटर बाय 1 मीटर शीट्स, wooden sheets and this steel sheets है, normally they will utilize it to form the farm work, but in case of the gem drains, these are very light materials as well as costly materials. Okay, now go to the next slide. Why the cover concrete is different from the bulk? This before going to farm work with the gem drains hai, now you see that means ये जो red line है, this is the design water cement ratio. For example, if you are using the 186 liters for the cubic meter, 1 cubic meter concrete में 186 liters पानी डाल दिया, क्यों डाला है उतना पानी, because you want to maintain the वर्केबिलिटी मेंटेन के लिए तो 186 लीटर पानी डाला, बट once the placing is completed in the actual component, that means either it is a beam or column or slab, the water requirement should be reduced, that means excess water should be reduced, so that work will be done by this controlled permeability farm work. That means what the farm work will do, this farm work, normal wooden farm work and steel farm work should not allow this water to go outside. But in case of the controlled permeability farm work, it will go and it will allow the water to go outside drain. Now this figure is very, very important figure. And a lot of times this question may be asked, explain the basic concept of the CPF liners. ये डायग्राम के साथ है, आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें देखो ये क्या है, दिस इज ए बीम और एनी स्ट्रक्चरल मेंबर, फॉर एग्जांपल बीम ही मान लो है ना, एक साइड है, ये जो येलो कलर है ना, दिस वन है सीपीएफ लाइनर, दैट मीन्स ये जम ड्रेन है, एक साइड है जम ड्रेन लगाया था, मान लीजिए बीम को लेफ्ट साइड में जम ड्रेन लगाया, राइट साइड में क्या किया था, ये वुडन शटर लगा दिया। Normally conventional commercial nowadays most widely using is steel and wooden na,
सो आप इधर स्टील लगा दीजिए, अदरवाइज वुडन लगा दीजिए। एक साइड है नॉर्मल फॉर्म वर्क लगा दीजिए, नॉर्मली वॉट एवर यू आर यूजिंग इन द आउटसाइड वो लगा दीजिए। दूसरा साइड है ये कंट्रोल्ड परमिबिलिटी लगा दीजिए। नाउ वाइब्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज द जोल्टिंग रॉड, है ना, दिस इज द जोल्टिंग रॉड, है ना। वाइब्रेटर स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद ये कॉन्क्रीट मैट्रिक्स है, मतलब वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द रीइंफोर्समेंट, दिस इज द रीइंफोर्समेंट। जैसा वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, जितना भी कैविटीज है कंप्लीटली फिल हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद जो भी एक्सेस एयर, एयर एंड वाटर, ये क्या करेगा, ये कंट्रोल्ड पेरिबिलिटी लाइनर से मतलब filter, okay, that means through the filter the air and water will be allowed to the controlled permeability framework. Actually ये जो dotted दिख रहा है ना, this dotted, this is the actual controlled permeability liner. एक्चुअली ये कपड़ा है, जस्ट लाइक आप शर्ट पहनता है ना, कॉटन कपड़ा है ना, कॉटन शर्ट जैसा, कॉटन शर्ट जैसा ये लाइनर है। मतलब व्हाट इज दिस येलो मटेरियल, दिस इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली कंट्रोल्ड पेरिबिलिटी फॉर्मवर्क मतलब है कपड़ा से बीम नहीं बनाइयो। डोंट मेक दी बाय यूजिंग द क्लॉथ, यू कांट गिव द सपोर्ट सिस्टम फॉर द बीम। बीम में कंक्रीट डाल दिया तो कितने वजन रहेगा भाई, मतलब बहुत भारी बीम है ना। मान लीजिए इसको भी स्टेबिलिटी के लिए मतलब स्ट्रांग मटेरियल रहेगा, बट सपोर्टिंग मटेरियल रहेगा। वो सपोर्टिंग मटेरियल के बाद ये मतलब एक लाइट कपड़ा जैसा डालेगा। ये कपड़ा को बोलते हैं, दिस क्लॉथ को बोलते हैं कंट्रोल्ड पेरिबिलिटी लाइन। जो भी ये डॉटेड कंट्रोल ना, ये पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर से जो भी ये मेश बनाएगा, दैट मीन्स एक जस्ट लाइक थिन शीट, थिन शीट है ना। आपका बनियान है ना, शर्ट में के नीचे जो बनियान पहनता ना, लाइक दैट एक कपड़ा मटेरियल है ना। ये मटेरियल के अंदर है ये जो भी एयर है, मतलब बिकॉज ऑफ दी यू आर गिविंग द लॉट ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेटर स्टार्ट कर दिया, वाइब्रेटर स्टार्ट कर दिया, ये वाटर एंड एयर है, मतलब बाहर भागना चालू करती है। इसी से बाहर आ जाती है, एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद है टपकेगा नीचे। नाउ द वाटर विल बी मतलब एक्सेस वाटर विल बी ड्रेन्ड कंप्लीटली, because the controlled permeability framework allows the air and water outside. But second side क्या किया है, सेकंड साइड है impermeable formwork. impermeable formwork मतलब नॉर्मली जो कमर्शियली व्हाट यू आर यूजिंग इन दी आउटसाइड फॉर्मवर्क, नॉर्मली ये शटरिंग, दैट मीन्स वुडन शटरिंग, स्टील शटरिंग। मतलब मैं है डिफरेंस पता करने के लिए आई वांट टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन दी सीपीएफ लाइनर एंड impermeable formwork. I have given the both items on a one concrete component. This concrete component have one side CPF liner and one side normal impermeable formwork. In impermeable formwork side, what is going on here? The air and water will be arrested here. That means because it don't have any force, मतलब जो भी steel sheet है or wooden sheet है, it don't have any force. That means the filter media it don't have. So because all the air and water will be arrested between the this concrete matrix and this impermeable surface. क्योंकि allow नहीं कर रहा है ना, it is not allowing, इसलिए water है बाहर जा ही नहीं सकता है, यही रहे बाहर जा ही नहीं सकता है। सो ये एरिया क्या करेगा, ये एरिया में मतलब ऊपर नीचे हनी कुम्बुड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा। नॉर्मली फॉर्म वर्क निकालने के बाद देखो, कॉलम्स देखो, बीम्स देखो, है ना, हनी कुम्बुड स्ट्रक्चर है, दिखती रहेगा, समझ में ना, आउटर पेरिफेरी में ऊपर नीचे रहेगा। क्यों? बिकॉज जितना भी वाइब्रेशन के टाइम में जितना भी एक्सेस पानी है, ये लेयर दैट मीन्स कॉन्क्रीट को ये जो स्टील पटरी है ना, स्टील शटर, that means between the shutter and the concrete matrix the water and the air will be मतलब form a thin layer. Because of this thin layer, after some days this thin layer will be evaporated due to the because of the sunshine and air dry, and this surface should not be smooth, it should be just like a corrugated surface. But whereas in case of this controlled permeability formwork, because of this permeable member, the air and water will be removed from outside. It will be sucked just like a one drop by drop, it will be sucked because of the additional vibration you are started that. So what happens finally, ultimately, this portion, this area, the concrete should be made with a very, very lower water cement ratio. For the strength point of view, if you are using the more and more
quantity of less water cement ratio, that means lower water cement ratio, your strength will be very, very high. In this case, in the right side, in this case, what happened? This water cement ratio is in the positive direction. Positive direction. Suppose if you are added the 186 liters, after that the water will be coming to the outer layer. In this area, lot of water cement ratio is there. So if in this area, now you see this is the blue color, light blue color. That means more water content is present in this area. So in this area, what is the strength of the concrete? Drastically fall down, because higher water cement ratio finally reflects on the compressive strength. ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो हो गए तो क्या प्रॉब्लम है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिर जाएगा ना भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना. सो इस एरिया में देखो हल्की ब्लू कलर में आ गया, उसका मतलब क्या है? दिस एरिया में पानी का कंटेंट है ज्यादा आ गया. मतलब व्हाट अबाउट दिस लाइट कलर, लाइट दिस सीमेंट कलर, व्हाट इज दिस मीनिंग? उसका मतलब है इस एरिया में पानी है नहीं है, जितना भी पानी है पूरा पूरा बाहर भाग गया. पानी का रिक्वायरमेंट क्या ब्रदर? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर? टू मेंटेन द वर्कबिलिटी. एक बार वर्कबिलिटी कब तक यूजफुल है? once you are placing the concrete on the component or the structure, once the job of the water is finished. The purpose of the water is to maintain the workability. Workability can be required up to the placing of the concrete in a particular place. Once it is placed, there is no need of the water. So this excess water now it is sucked out with the help of the CPF line. That's why within this area, with this rectangular portion, the lower water cement ratio will be maintained. Lower water cement ratio will be maintained so that the strength of this area concrete is very, very high. But whereas in case of this area, the lower strengths will be reported because the water cement ratio is high. Okay. Main advantages of the using the controlled permeability formwork. Yeah, the surface skin of the concrete is the first line defense against the penetration of the aggressive agents such as the water, chloride, CO2, improvements, the quality of the surface skin increases the durability of the concrete. क्योंकि controlled permeability formwork में मतलब outer periphery कैसे बनेगा? Very very smooth and dense बन जाएगा. At that time अगर dense बन गए तो बाहर agents है जो नुकसान करती है. What are the various elements? हंग्री वाटर है, कार्बन, दैट मीन्स क्लोराइड आयंस है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फेट्स है, क्लोराइड्स है. ये शुड नॉट इंग्रेस, मतलब अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आउटर सरफेस है. भैया विंटर सीजन में आप स्वेटर क्यों पहनता भाई? वाई यू आर वेयरिंग दिस स्वेटर? बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड कोल्ड ब्रीज. समझे ना? बिकॉज ऑफ योर मतलब स्वेटर है, मतलब वो पेनिट्रेट नहीं करने देती है. इट शुड नॉट पेनिट्रेट द कोल्ड ब्रीज so that your body will be very warm condition in winter season. Similarly, ये controlled permeability use करने में जो outer periphery है dense concrete formation हो जाएगा. This is very dense concrete. So ये reinforcement का जो cover है, what is this cover? This cover है 25 mm. ये 25 mm का cover है, very high strength concrete बनेगा. So that बाहर से मतलब ये shuttering निकालने के बाद ये after removing the shuttering also, this outer cover will act as a impermeable member to deny the entry of the carbon dioxide, chloride, sulfates, जो external agencies, वो external agencies को permit नहीं करता. वही बता रहा है इधर. That means the external agencies should not enter due to the hard skin. Most significant advantage is increased resistance to corrosion of the steel reinforcement for the longer service life. बिल्डिंग का जो लाइफ है ना बढ़ता जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट मेड विथ CPF liner by using numerous laboratory investigations, site trials. Various countries have established the improvements of the properties of the gem drains. Lower water cement ratio. The lower water cement ratio obviously will imply to higher strengths. Okay. Next, increased surface strength and absence of the blowholes. Blowholes matlab hai the surface you will find out the corrugations, that means wavy surface. So that is because of the small holes. That holes, why that holes are formed? Because now you see in the picture, इस पिक्चर में देखो ये वाटर बबल्स फॉर्मेशन हो गए ना, ये वाटर बबल है, सूख जाएगा. फिर वो जो वाटर बबल में भी
मतलब आपका जो सरफेस है ऐसा स्मूथ नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऐसा गोल गोल का बबल्स फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, now reduce the chloride ingress and reduce the carbonation because ये chloride ions है, sulfate ions है, carbon dioxide है, and ये external agencies है should not enter because of the high dense. Now you see, इसको देखो, ये surface है, इसको देखे आप अभी तक क्या सोचे हैं, ये कपड़ा नहीं, ये कपड़ा रहेगा, दिस क्लॉथ रहेगा, ये पॉलीप्रोपाइलिन क्लॉथ है, ये लाइट क्लॉथ है, ये क्लॉथ कहाँ रहेगा पता है, ये आयरन शटर्स के बाद रहेगा। दैट मीन्स नॉर्मल शटरिंग में क्या है, वो स्टील शटर रहेगा, ये गोल शेप में स्टील शटर रहेगा। बट कंट्रोल्ड परमिबिलिटी फॉर्म वर्क में क्या करेगा, एडिशनली वो स्टील शटर को एंड कंक्रीट, इसको ये है कंक्रीट कॉलम है, गोल कॉलम है ना, सर्कुलर कॉलम है, ये कॉलम को ये स्टील शटरिंग का बीच में एक पतली कपड़ा डालेगा, वो कपड़ा इज नथिंग बट दैट क्लॉथ इज नथिंग बट दैट पॉलीप्रोपाइलिन क्लॉथ इज नथिंग बट कंट्रोल्ड परमिबिलिटी। नाउ यू सी, अगर ये शीट्स है, एक गोल कॉलम बना दिए, देखो इसको प्लास्टरिंग जरूरत है क्या, देयर इज नो प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड, असल इतना स्मूथ बन गया है ये कंक्रीट कॉलम। ये जो शटरिंग निकालने के बाद भी कॉलम देखो, है ना, शाहपुर जी पल्लम जी का जो मुंबई हाईराइज बिल्डिंग में एक कंक्रीट कॉलम्स है, देखो ये कंक्रीट कॉलम बना दिया है, कंक्रीट कॉलम्स है, इसके लिए तो देयर इज नो नीड ऑफ द प्लास्टरिंग, समझे ना क्यों, ये जो पॉलीप्रोपाइलिन कपड़ा है इट विल एक्ट एज ए फिल्टर मीडियम, इसका जो भी मतलब सीमेंट पार्टिकल्स, फ्लाई एश पार्टिकल्स, सिलिका फ्यूम पार्टिकल्स है, they are not at all went outside, only the water will be went outside, so that high strength concrete cover will be formed at the periphery of this सर्कुलर कॉलम। अगर इससे तो कंक्रीट क्लोराइड आयंस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सल्फेट है आयंस है, एनी इंग्रेस ऑफ द हंग्री वाटर है, entry is not possible. Once if they are not entered, there is no question of the durability problems because the reinforcement is safe. The cover जितना कवर है मतलब स्ट्रांग रहेगा, आउटर कवर स्ट्रांग रहेगा, सो दैट है मतलब आपको मतलब आपका reinforcement है, करोड़ ही नहीं होगा, बिल्डिंग का जो लाइफ है इंक्रीज। पुल आउट स्ट्रेंथ मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पुल आउट, मान लीजिए कंक्रीट क्यूब के ऊपर है ना एक सरिया, कास्टिंग का टाइम में एक सरिया घुसा के रख दो भाई, 28 दिन के बाद है उसको निकालने के लिए कोशिश करो, दैट इज द पुल ऑफ। बाहर निकालने के लिए कितने स्ट्रेंथ चाहिए। नेक्स्ट कुछ रिबाउंड नंबर, दैट मीन्स कंक्रीट मिक्स, दैट मीन्स C30 जम ड्रेन्स एंड C60 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो एंड विदाउट जम ड्रेन्स। सीरीज 1 सीरीज 2 में आपका जो देखो मतलब ये जो रिबाउंड नंबर है इंप्रूवमेंट हो गया ना, जेड मतलब है कंक्रीट विथ जम ड्रेन्स, concrete with M30 grade, M30 grade concrete with 0.65 water cement ratio। इसका जो भी रिबाउंड नंबर कितना आया, कम आया ना, रिबाउंड नंबर जितना ज्यादा आया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कोरिलेट करेगा ना, रिबाउंड नंबर ज्यादा आ गया मतलब क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ज्यादा है ना, दैट मीन्स रिबाउंड नंबर किस लिए यूज करते हैं, दैट इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, बिकॉज समटाइम्स है कंक्रीट का स्लैब का स्ट्रेंथ यू वांट टू फाइंड आउट, देन रिबाउंड हैमर यूज करके निकाल सकता है इनडायरेक्ट वे में। तो आपको रिबाउंड हैमर टेस्ट है मतलब कुछ प्रोजेक्ट है, C30Z जम ड्रेन हैज हायर रिबाउंड नंबर देन दी C60 कंक्रीट ग्रेड ऑफ द M60 ग्रेड कंक्रीट, दैट मीन्स ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, ये नॉर्मल कंक्रीट से भी रिबाउंड नंबर है, देखो C30 कंक्रीट मिक्स C30 जम ड्रेन यूज किया तो ये आ गए थे। व्हाई दिस इज केम, because rebound hammer number is indirectly related to the surface hardness, surface hardness ज्यादा स्ट्रांग है आपको रिबाउंड नंबर है ज्यादा आ जाएगा, समझेगा ना, क्योंकि रिबाउंड नंबर इज वर्किंग प्रिंसिपल इज द सरफेस हार्डनेस। अगर आपका जो जम ड्रेन्स में जो सरफेस देखे, ये सरफेस देखे कितने हार्ड हो गया है, फिर अगर इसके ऊपर रिबाउंड हैमर से मतलब रिबाउंड हैमर नंबर निकालोगे, हायर नंबर रिपोर्ट हो जाएगा, हायर नंबर रिपोर्ट हो रहा है मतलब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ द हायर नंबर, द रिपोर्टिंग ऑफ हायर नंबर इनडायरेक्टली गिव्स द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट इज द मीनिंग। ओके, नाउ आईसैट टेस्ट, आईसैट व्हाट डू यू मीन बाय आईसैट टेस्ट, एनीवन, मतलब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ओनली वन साइड हो रहा है। अक्षय कभी सुना है क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आईसैट, ठीक है? No sir, no sir.
पहले बार सुन रहा है? हाँ जी हाँ, सर। ओके। हाँ, राइट राइट, ओके, गुड। आईसैट टेस्ट है, मतलब ये इनिशियल सरफेस अब्जॉर्प्शन टेस्ट, आईसैट टेस्ट। दैट मीन्स ये है, मैंने बल्लभगढ़ में देखा, जो बल्लभगढ़ है ना, जो न्यू दिल्ली के पास है, एक एनसीबीएम लैबोरेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि मेरा पीएचडी टाइम में मतलब कुछ सैंपल्स लेके गया था मैंने, है ना, आईसैट के लिए। दैट मीन्स इनिशियल सरफेस अब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये क्या करता पता है? मतलब ये 2 घंटा, दैट मीन्स एक बारिश के अंदर रख देता। बारिश मतलब है, मतलब लैबोरेटरी कंडीशन में, मतलब जो बरसात मतलब क्यूब्स कास्ट करता है, मतलब 150 बाई 150 बाई 150 क्यूब्स दे आर कास्टेड, समझ गए ना? सुनो, मैं ऐसा टेस्ट है कैसे करता है, ध्यान से सुनो। मान लीजिए आपने क्यूब कास्ट कर दो 150 बाई 150 बाई 150, वो क्यूब को 110 +or -10 डिग्री टेम्परेचर में, मतलब वो क्यूब्स को ओवन में रख देता है। अभी क्यूब है, बहुत गरम गरम क्यूब है, समझ गए ना, कंक्रीट क्यूब है। फिर वो क्यूब को एक चैम्बर रहती है, वो चैम्बर में आर्टिफिशियल रेन विल बी प्रोवाइडेड। आर्टिफिशियल रेन मतलब है, मतलब मूवीज में देखा होगा ना आप, सिनेमास में, मतलब वो आर्टिफिशियली रेन बरसात शुरू हो जाती है। सिमिलरली एक आर्टिफिशियली, मतलब वो क्योंकि ये गरम गरम सरफेस में 2 घंटा तक है, मतलब ये क्यूब के ऊपर है, बरसात गिरने देती है। दैट मीन्स दिस इज द टेस्टिंग प्रोसीजर। क्योंकि मतलब जो भी क्यूब है, मतलब ज्यादा पानी ऑब्जर्व कर लिया, ज्यादा पानी ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि इनिशियल वेट तोल दो, मतलब जब भी बरसात स्टार्ट करने के पहले, मतलब क्यूब का वेट तोल दो, मान लीजिए 4 kg, फॉर एग्जाम्पल 4 kg, मतलब 2 घंटा बरसात के बाद है, मतलब फिर से वेट तोल दो, कंक्रीट है, कितने पानी ऑब्जर्व कर लिया है, सरफेस सरफेस। दैट मीन्स कंक्रीट सरफेस के ऊपर है। अगर मान लीजिए कंक्रीट मेंबर है, आउटसाइड कंक्रीट मेंबर के ऊपर है, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होती है, दैट मीन्स कंक्रीट है, बिल्डिंग के ऊपर गिरेगा, कितने पानी ऑब्जर्व कर रहा है सरफेस, कंक्रीट सरफेस। अगर ज्यादा कंक्रीट ज्यादा रेन ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब क्या है, वो बेकार कंक्रीट है। दैट मीन्स समझ में आ गया ना, हाउ मच मिलीलीटर्स ऑफ द वाटर इज ऑब्जर्व्ड पर स्क्वायर मीटर एरिया, मतलब 1 स्क्वायर मीटर सरफेस के लिए हाउ मेनी मिलीलीटर, दैट मीन्स 1 मिलीलीटर इज नथिंग बट 1 ग्राम ना, दैट मीन्स 1000 ml मतलब है 1 kg। दैट मीन्स आपने 500 ml पानी पी लिया है कंक्रीट, उसका मतलब कितने, 500 ग्राम पानी, वजन बढ़ जाएगा ना भाई। सो आपका जो भी सरफेस है, वो सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, मतलब हाउ मच वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय दैट सरफेस। इफ ज्यादा सरफेस ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब है दैट इज वेरी डेंजरस कंक्रीट, क्योंकि सरफेस से पानी अंदर जा रहा है, मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आराम से घुस जाएगा ना, क्लोराइड आयन घुस जाएगा ना, मतलब सल्फेट अटैक हो जाएगा ना, क्लोराइड इंग्रेस हो जाएगा ना, कार्बोनेशन हो जाएगा ना। सो आपका जो सरफेस है, वेरी डेंस सरफेस, डेंस सरफेस मतलब क्या है, पानी अब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए। इनिशियल सरफेस अब्जॉर्प्शन टेस्ट, इनिशियल सरफेस अब्जॉर्प्शन टेस्ट है, 2 घंटा के लिए वाटर है, रेनी वाटर अलाउ करेगा। हाउ मच वाटर इज ऑब्जर्व बाय दैट पर स्क्वायर मीटर एरिया में, 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए हाउ मच ml इज वाटर, दैट मीन्स C30 ग्रेड कंक्रीट है, इफ दे हैव टेस्टेड 1998 मिलीलीटर, दैट मीन्स 2 kg, अप्रोक्सीमेटली 2 kg पानी है, पी लिया है, दैट मीन्स 2 kg ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय द 1 स्क्वायर मीटर एरिया। नाउ अगर जम ड्रेन यूज किया तो, नाउ यू सी, अगर जम ड्रेन लाइन सरफेस यूज किया है, जेड मतलब है जम ड्रेन, अगर जम ड्रेन यूज किया है, मतलब कितने कम पानी पिया, देखो, ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट है 1/4, 1/4 पानी पिया है। उसका मतलब क्या हो गया, जो सरफेस है वेरी वेरी हार्ड सरफेस, पानी को अंदर घुसने नहीं दे रहा, इट शुड नॉट ऑब्जर्व। जितना भी पानी आ गया ना, जस्ट लाइक पॉलिथीन पन्नी के ऊपर पानी गिर गए तो क्या होगा, पूरा पूरा बाहर ही निकल जाती है, समझ में ना, बर्फ छाता के ऊपर है, पानी अंदर जाएगा नहीं ना, क्योंकि वो जो कपड़ा है दैट इज ए मतलब प्रोपाइलिन कपड़ा है, समझ में है ना। सो यस, नाउ यू सी, अगर M30 ग्रेड कंक्रीट है, 2000 मिलीलीटर पानी पी लिया, एंड जम ड्रेन यूज किया, तो वही सेम M30 ग्रेड कंक्रीट प्रोवाइडेड विथ जम ड्रेन सरफेस, जम ड्रेन लाइनर, जम ड्रेन लाइनर प्रोवाइड किया, तो मतलब 500 ml पानी मात्र पी लिया है। एंड M50 ग्रेड कंक्रीट, अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M50 ग्रेड कंक्रीट यूज किया है ना, तब कितने पानी पिया है, 1228 मतलब ग्राम्स ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड इन द इनिशियल सरफेस ऑब्जर्वेशन टेस्ट ऑफ द 2 hours रेन। नेक्स्ट कार्बोनेशन डेप्थ, कार्बोनेशन भी देखो ना, कितने डेप्थ तक है कार्बन डाइऑक्साइड पेनिट्रेट हो गया,
दैट मीन्स 8 mm तक है कार्बन डाइऑक्साइड है पेनिट्रेट हो गया, पेनिट्रेट हो कब, when normal M30 grade concrete. M30 grade concrete, that means cement with concrete mix. C मतलब है concrete mix of M30 grade and by using the jump drain कितने हो गया? That means it is penetrated only 4 mm. आधा डेप्थ तक ही पेनेट्रेट हो गया. एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में 7 mm तक है पेनेट्रेशन कार्बन. एंड वाटर परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ वाटर, permeability of the water, so many milligram, permeability क्या है, so many mg पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स कितने मिलीग्राम्स ऑफ द वाटर है, मतलब स्क्वायर मीटर एरिया और अदरवाइज स्क्वायर मिलीमीटर के लिए, मतलब परमिबिलिटी, दैट मीन्स परमिबिलिटी है. मान लीजिए एक कंक्रीट एरिया ले लो भाई, ऊपर से पानी फेंको, दैट मीन्स एक स्क्वायर मिलीमीटर एरिया में और स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर और हाउ मच वाटर इज परमिटेड, दैट मीन्स परमिबिलिटी मतलब है नीचे पेनिट्रेट करेगा. दैट इज यू कैन ग्राम पर स्क्वायर सीसी बोलो, ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर इज अलाउड पर स्क्वायर सेंटीमीटर, अदरवाइज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ केजी ऑफ वाटर अलाउड फॉर स्क्वायर मीटर एरिया, दैट इज द यूनिट ऑफ द परमिबिलिटी. परमिबिलिटी मतलब है कुछ एरिया ले लो भाई, 1 मीटर एरिया, 1 मीटर एरिया में मान लीजिए ऊपर से पानी फेंको, वो कंक्रीट है, पानी है, नीचे से परमिबिलिटी करेगा, परमिबल करेगा, अलाउ करेगा. सो हाउ मच वाटर है नीचे से, मतलब उसका वजन तोल दो, हाउ मच वाटर इज permitted through that concrete member, that is 1.96 into 1.96 into 10 to the power minus 10. एंड ये जो जम ड्रेन यूज करने में क्या हुआ, 6.91 into 10 to the power of minus 12, समझ गए ना. सो आधा अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये कम हो गया, कम हो गया. ये 10 to the power minus 10 है, ये 10 to the power minus 12 है, दैट इज द डिफरेंस. ये वैल्यू बढ़ गया, बट ये जो minus 12 है, इसलिए मतलब परमिबिलिटी है ना बहुत कम हो गया. नेक्स्ट, रिजल्ट्स अबव शोस दैट C30 ग्रेड कंक्रीट मिक्स with jump drain, C30 has better durability properties than the high strength concrete. C50 मतलब है ये यूरोपियन यूनियन पीपल है, दीज पीपल है, मतलब दे विल यूज दी C50. हम लोग इंडिया में क्या है M50 M60 नाम से बुलाता है, दैट इज द डिफरेंस. नेक्स्ट, दीज आर द सम रिजल्ट्स, है ना. कार्बोनेशन डेप्थ है, हाँ, ये क्लोराइड इंग्रेस देखो, द प्रॉब्लम विद द कंक्रीट सरफेसेस क्लोराइड डिफ्यूजन. देखो ये क्लोराइड आयन है ना, कवर है इनएडिक्वेट का, असल ये सरिया बचा नहीं है, ये सरिया है कंप्लीटली, मतलब करोड़ हो गया, करोड़ हो के सरिया निकल गया. तो ये कंक्रीट स्लैब है ना, जल्दी गिर जाएगा. क्यों, जो टेंशन पोर्शन में देयर इज नो रीइंफोर्समेंट. नेक्स्ट, क्लोराइड इंग्रेस. The corrosion of the steel reinforcement in concrete is mainly caused by ingress of the chloride ions. जो chloride ions है, that means ये carbonation है ना, ये use of the controlled permeability formwork will reduces the ingress of the corrosion. corrosion क्यों ingress करते हैं, reduce करती है, because ये chloride penetration है, arrest करेगा, so that है iron rod है, जो भी bottom में जो भी iron rod है safe रहेगा बस. नेक्स्ट, मेजर्ड क्लोराइड प्रोफाइल. क्लोराइड प्रोफाइल है, इन्होंने किया डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस मिलीमीटर 0 से 10 mm का तक, दैट मींस क्लोराइड आयन इंग्रेस है. अगर कंट्रोल्ड पेरिमिबिलिटी विथ कंट्रोल्ड पेरिमिबिलिटी फॉर्म वर्क है तो ये वैल्यू, एंड नॉर्मल केस में 3.18. नाउ यू सी ये 3.18 है, ये 2.14 है, कितने कम हो गया देखो. नेक्स्ट, ये 10 to 25 mm डिस्टेंस फ्रॉम दी सरफेस, मेजर्ड क्लोराइड प्रोफाइल है, मतलब 10 मिलीमीटर से लेके 25 मिलीमीटर के बीच में क्लोराइड प्रोफाइल है. वो लोग ना, ये रशीद कंपनी है, मतलब दुबई वाले ने नाप के देखा है, ये 0.94. अगर कंट्रोल्ड परमिबिलिटी यूज किया तो आधा हो गया, ये जितना कम है तो उतना बेस्ट भाई, with controlled permeability formwork. These are the some of the experiments they are conducted in the रशीद पोर्ट में, दुबई में, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है. नाउ यू सी ये फिगर में इसको जम ड्रेन यूज किया तो क्या हो गया, इसको बॉटम में आ गया. नाउ यू सी ये जो कर्व है, इट इज केम, दैट मींस क्लोराइड परसेंटेज बाय वेट ऑफ द सीमेंट. अगर क्लोराइड आयन पेनिट्रेशन है, क्या हो गया, इसको देखो, जो भी इसके पहले जो भी ये वैल्यूज है, एक मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया. नाउ यू सी नॉर्मल कंट्रोल्ड वर्क मतलब क्या है, नॉर्मल केसेस. नॉर्मल केसेस में ये ब्लू लाइन, देखो ये जम ड्रेन यूज करने में नीचे, दैट मींस ये क्लोराइड आयन प्रोफाइल है, कितने कम है तो उतना बेस्ट है ना, दैट मींस बिल्डिंग का जो लाइफ है बढ़ता जाएगा. नाउ यू सी
ये देखो कंट्रोल्ड परमिबिलिटी फॉर्म वर्क यूज करने में बिल्डिंग का लाइफ क्या हो गया 65, एक्टिवेशन टाइम है 75 mm, कवर यूज किया तो 65 years, एंड नॉर्मल केसेस में विदाउट यूजिंग कंट्रोल परमिबिलिटी फॉर्म वर्क 35 साल ही बिल्डिंग का रहेगा। समझ में ना वर्कमैनशिप। द स्लाइड नंबर 300, दिस वी विल गो टू द नेक्स्ट क्लास। अब टोटल स्लाइड्स कितने हैं, 60 स्लाइड बचा भाई।